Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 22nd of January. In this video students, we will be talking about an entity locker that has been launched for the business document management. Next thing, we will be talking about the Singapore's visit to India from 14th to 18th of January. Multiple MOUs has been signed here. We will be discussing them. Next thing we will be discussing is about the first kind of or India's first kind of CSIR innovation complex that has been inaugurated in Mumbai, Maharashtra. Next thing we will be talking about climate change, various conflicts. We will be talking about Donald Trump, who has become the 47th president of USA. Some important verdicts has been launched by him, right? Some important decisions has been taken by him that will impact India. How it will be impacting India, what are the changes that we'll be seeing ahead, we will be discussing in this video and many more. So stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. We make sure to upload the weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise regularly to give you a better understanding of the topic. Also students, share the link of this video with your friends, cousins, relatives and neighbors and let them know about this interesting platform where we discuss news in details. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Next students, we are discussing national affairs, NEGD, that is your National Electronic Governance Division. This comes under the Ministry of Electronics, Information and Technology. They have recently introduced this entity locker. So the first question can be asked is the name the ministry that launched this entity locker. It was launched by MEITY, or it was NEGD, that is National Electronic Governance Division, that launched this entity locker. This entity locker, it is a digital platform. It is a digital platform and it has been launched to simplify the organizations manage and verify their document. So simplify the documents handling, right? Business document management, this has been launched. This aligns with India's digital public infrastructure. Also this entity locker, this is secure. It is working on cloud technology, right? And here it will be helping various MSMEs, various startups, various trusts, various business in managing their document and making sure that the documents are safe. Here you can see this entity locker. It is secure, cloud based, that helps the businesses including large corporations, MSMEs, trusts, startups, societies, stores, share to verify the documents. Correct. This platform, it will provide real-time access and accuracy by instantly verifying the documents through the integration and the government database. Also this platform will provide 10 GB of encrypted cloud service for secure document management. Next is Singapore's president. As you can see him in the picture here, Tharman Shanmugaratnam has visited India from 14th to 18th of January, right? Now during his visit, multiple ties has been signed. We will be seeing multiple MOUs that has been signed here. One such important MOU is MOU by the Odisha state, right? So Odisha state, and here President Tharman of Singapore, he has recently signed this MOU where Odisha government and Singapore organizations will focus on enhancing cooperation in the fields of skill development, green energy and industrial growth. What is the capital of Singapore? It is Singapore itself, and the currency is Singapore dollar.
SGD, right? This is like similarly for India INR, similarly for Singapore dollar it is SGD, for Canadian dollar it is CAD. Next thing, remember, we will be talking about the 60th anniversary commemorative logo has been launched by the President of Singapore recently, right? Along with President of India, Draupadi Murmu ma'am, and they have jointly unveiled this 60th anniversary commemorative logo at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. And this logo celebrates the 6 decades long strong ties between our India and Singapore. Next is Union Minister Dr. Jitendra Singh has inaugurated India's first of its kind CSIR Innovation Complex in Mumbai, Maharashtra. This CSIR, that is Center for, that is your Council of Scientific and Industrial Research. So Dr. Jitendra Singh, he's our Union Minister of Science and Technology and Ministry of Earth Science, has inaugurated India's first of its kind CSIR Mega Innovation Complex through virtual mode and dedicated it to startups and industry stakeholders in Mumbai, Maharashtra. Take a note of this, right? Next thing, remember, this innovative or innovation complex, this is a facility that spans across 9 floors and has 24 ready to move incubation labs that will help the MSMEs startups to grow. Next is international affairs students. Here, climate change, conflict, digital inequality disrupting the children's life, and this report was released by UNICEF. Right? UNICEF, that is United Nations Children Fund, that is a humanitarian aid organization of United Nations, and they have released this report that stated climate change, economic instability, conflict and digital inequality are disrupting the children's life and limiting their prospectus. If we talk about this only here, the global impact of conflict on children, as per the report, more than 473 million children, that is more than 1 in 6 globally, lived in areas that are affected by conflicts in 2023. Also, if we talk about children that are living in the debt-ridden countries, they are nearly 400 million children live in debt-ridden countries, which hinders the important investments in sectors such as education, healthcare and social protection. If we talk about UNICEF only, who is the executive director here? Catherine Russell, headquartered in New York, USA, established in 1946, and there are 190 member countries of UNICEF. Next is RBI. They have released NBFC upper layer list for 24-25. Right? If we talk about this list itself, first thing, right? This is your list here that has been released. NBFC BSL, that is your base layer. It consists of the non-deposit taking NBFCs with assets less than 1000 crore rupees. Then for the middle layer, it consists NBFCs, that is your all deposit taking NBFCs and non-deposit taking NBFCs with assets more than 1000 crore rupees. Upper layer are subjected to enhanced regulatory requirements for at least 5 years, even if they fail to meet the criteria in the subsequent reviews. Then the top layer, they will be moved to top layer if RBI recognizes a substantial increase in their potential system risk. Right? So here you can see RBI, they have released the upper layer, and RBI has retained Tata Sons Private Limited in the NBFC upper list. Correct? Take a note of this. Also, the updated list comprises these 15 companies, and correct, Piramal Enterprise Limited, which qualified for inclusion on the list based on scoring, has been eliminated for FY25 due to the ongoing recognition in the business group. Next is your SBR framework. So recently in October 2021, RBI has introduced this SBR framework, which classifies the NBFCs into 4 different layers based on their asset size and scoring methodologies. And these are the 4 different layers that we are talking about. Right? Next is IDFC First Bank. Right? They have unveiled the first earned RuPay credit card. I repeat, it is which bank that has launched the first earned RuPay credit card? It has been launched by IDFC First Bank. Right? It has been launched in partnership with NPCI, that is National Payment Corporation of India. It has been developed by whom? It has been developed by RuPay, that is a global card payment network from India, and they have launched this UPI enabled first earned RuPay credit card. Right? Here, this will basically backed by FD. This card is instantly available. That means you go for a 1 lakh rupees FD, then you will have the limit of 1 lakh rupees in this card. It lets the customers access credit on UPI, earn rewards, and enjoy attractive interest on FD simultaneously. Right? And for this, the minimum FD will be of 5000 rupees with the bank. Next is global data. Here HDFC Bank and ICICI Bank and SBI rank, right,
Among the top 25 global banks by market cap, JP Morgan Chase has topped the list. So recently a data was released, right? And this data was released by UK based analytics company, that is Global Data PLC. Global Data PLC. So this is the organization that has released this report. This report is about the top 25 global banks, correct? And here we will be talking about their market capitalization. In this, on the first position is USA based JP Morgan Chase Bank, that remains the world's largest bank with a market cap of $674.9 billion. Correct, take a note of this. Here you can see JP Morgan first, Bank of America on the second position. Here only, if we talk about the ranking, HDFC Bank. HDFC Bank was at the 7th position. Earlier they were at the 13th. They were at the 13th position. Earlier they were at the 7th position. They have been dropped from 7th to 13th position here. Then ICICI Bank, it has moved to the 19th spot, and SBI was at the 24th position. Correct. This Global Data PLC, it is London UK based organization. Moving on, next is Shriram Housing Finance. They have rebranded as True Home Finance Limited. I repeat, recently Shriram Housing Finance, they have rebranded them as True Home Finance Limited. Direct question will be asked here. Correct. Here you can see this rebranding follows their acquisition by Warburg Pincus. By Warburg Pincus. Correct. Here Shriram Finance Group received an investment of 1,225 crore rupees, increasing the company's net worth to 3,300 crore rupees. Moving on, next we are talking about India's GDP. Here IMF, International Monetary Fund, they have retained the India's GDP growth forecast at 6.5% for FY26 and FY27. Take a note of this. Here it is important to know that it was expected in 2024 that India's GDP will be growing by 8.4%, but because of multiple reasons we are seeing a slowdown here. Also, if we are talking about the global economic outlook, right, globally if we talk about, it is projected that it will grow by 3.3% for both 2025 and 2026. This we will be seeing that now Donald Trump, he became the 47th president of USA, and during his or basically after his ceremony, oath taking ceremony, now the first thing that he has said is that H1B visa holders won't be able to get or their children won't be able to receive the citizenship, because if they are born in the country itself. Also, you will be seeing multiple immigrants, illegal immigrants, will be transported back to their own country as per the new guidelines that has been released by Donald Trump. So it will impact huge on India, because there are so many individuals that have moved to USA following the illegal route that they used to take from Mexico. Even the Trump is threatening Canada and Mexico with 25% tariff on all the trade that they are doing. Right. So because of this, there will be multiple risks here. You can see here IMF warned the risks such as intensification of protectionist policies could lead to higher tariffs. Tariffs are your charges, then disrupt global trade flows, lower investment. Also, geopolitical tension in regions like Middle East and Ukraine could affect commodity prices, particularly in energy and food sector. Coming to IMF, International Monetary Fund, who is the managing director? Kristalina Georgieva, headquartered in Washington, D.C., USA, founded in 1944. Next is Modi. Modi has lowered India's economic growth forecast to 7% for FY25. Right, that means they are projecting India to grow by 7% for FY25. This slowdown is particularly because of the tightening monetary policies. Even there is a high chance now that the interest rate in India can be reduced. If interest rate is reduced, then we can see a boom in the industry, because more organizations, or we can say in simple terms, that the loans will become cheaper and more loans will be taken by organizations. But in other side, right, this because we know for a coin there are two sides, right? This is the one side. The other side is that if the interest rates are reduced, then the inflation in the market will rise, the price will shoot up for the commodities. Real estate
the prices will increase, right? And even now we are seeing that the 8 pay commission will be established by the government of India, right? The committee will be set up, a report will be released, then we will be seeing that from 1st of January 2026 this will be implemented, right? So all these things can lead to higher economic growth, and on the other hand the inflation will also rise if not if the interest rates are not checked properly, right? Next is CSE and NCDEX. They have signed a memorandum of understanding for commodities and derivatives trading. So CSE, that is your Colombo Stock Exchange of Sri Lanka, and National Commodity and Derivative Exchange of India, they have signed this MOU. So CSE is for Sri Lanka, NCDEX is for our India, right? They have signed this MOU for commodities and derivatives trading between India and Sri Lanka. Next is appointments and resignation. Gyanendra Pratap Singh, as you can see him in the picture, has been appointed as the Director General of CRPF. Right? Gyanendra Pratap Singh, correct? He has been appointed as Director General of CRPF. He will be succeeding whom? He will be succeeding Vitul Kumar. Right? Next, one more thing remember here. Senior IPS officer Mahesh Kumar Agrawal has also been named as the Additional Director General of Border Security Force. Moving on, here you can see Mahesh Kumar Agrawal as the Additional Director General of BSF. Next is Nidhi Khare has assumed the additional charge as the Secretary of MNRE, that is Ministry of New and Renewable Energy. Take a note of this. She will be succeeding Prashant Kumar Singh, who has been appointed as the Chief Secretary of Manipur now. Next is sports. India Open 2025 was held, and Victor Axelsen and NC Young has secured the men's and women's single titles respectively. So Victor Axelsen men's, NC Young women. If we talk about NC Young here, or if we talk about Victor Axelsen is from which country? Or Victor Axelsen, right? He is from which country here? Tell me. Victor Axelsen, or we can say Victor Axelsen. He is from Denmark, right? And he has won gold in men's singles at the 2020 Tokyo Olympics, as well as he won the 2024 Paris Olympics also. Correct. If we talk about NC Young, here let me show you only, that will give you a better idea. Men's title Victor Axelsen of Denmark, women's single title NC Young of South Korea, and for men's doubles and women's doubles respectively. Moving on, next is Kho World Cup. It is scheduled to be held in India, or India will be hosting the first ever edition of the Kho World Cup, that is scheduled to be held in 2025. It will be held at the Indira Gandhi Indoor Stadium, that is in New Delhi. It will be from 13th to 19th of January. Right? And here the India's men team will be captained by Pratik Vaikar, while the women's team will be captained by Priyanka Ingle. Next, here, the Indian men's team was in Group A with Nepal, Peru, Brazil, Bhutan, while the women's team was in Group A with Islamic Republic of Iran, Malaysia, and Republic of Korea. Right? Take a note of this. Right? Now, as I mentioned that this was scheduled to be held in from 13th to 19th of January. Right? So, who won the men's title and who won the women's title? Both are important. Right? So, our India has won both men's and women's Kho World Cup titles 2024 or 2025. That was the first ever editions, right? So multiple questions. Where this will be hosted? It was hosted in India, right? Where was this hosted? It was hosted at Indira Gandhi International Stadium, Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi from 13th to 19th of January. Who won the men's title? It was won by Indians men team, and women also won by women's Indian team. Correct? Take a note of this. And this was the first ever edition, or the inaugural edition. Next is Jannik Sinner and Igla Swiatek has crowned as the ITF World Champions. ITF is your International Tennis Federation's champion. Here Jannik Sinner, he is from Italy, as you can see him in the picture here. Iga Swiatek, she is from Poland. Correct? Take a note of this. With this, remember, Jannik Sinner became the first Italian player to receive this award, and here Iga Swiatek was awarded this for the second time. Before, she was awarded in 2022 and now again in 2024. Here you can see men's single title champion Jannik Sinner, women's single Iga Swiatek, men's double and women's double respectively. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part, then we will be moving to the homework section.
Next, which department under the Ministry of Finance has kept the interest rate on small savings schemes unchanged for the third quarter of FY25? So, which is it? It is your Department of Economic Affairs, right? This is for the third consecutive time, right, of FY that the interest rate on these small savings schemes has remained unchanged. Next, who gave a warm send-off to 7,000-kilometer Vayu Veer Vijeta car rally from New Delhi to mark the 92nd anniversary of the Indian Air Force? So, Rajnath Singh, our Defence Minister, right, he recently gave this warm send-off to Vayu Veer Vijeta. Next, which state has recently become the first state to get Niti Aayog's Women Entrepreneurship Platform chapter? So, which state is it? It is Telangana state. Right, this WEP Telangana chapter was launched by BVR Subramaniam, the CEO of Niti Aayog, and here this hub or this WEP, right, this is an initiative that is a platform that was set up, or basically we can say the main objective of this is to support the women entrepreneurs in Telangana. Focus will be on mentoring, financially helping them, and also skill development of those women. Next, on October, Union Minister Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, attended the 40th Raising Day Parade of the Dash in Nasik, Maharashtra. So, he attended the 40th Raising Day Parade of what? It was the 40th Raising Day Parade of Railway Protection Force, that is RPF. Right, as the chief guest, he honored 33 Railway Protection Force personals with police medals, also with the Jeevan Raksha medals for their courageous efforts. Next, which state traditional products have recently received the GI tag by the GI registry? So, recently it was Assam, correct, that recently got the GI tag for 8 products. These 8 products are the traditional food items, unique varieties of rice beer, right, and that reflects the practices of a Bodo tribe. Correct, take a note of this. Products such as Johu Gishi, Nafam, Ondla, Guakha, Narzi, these are the some products here. Next, which organization or ministry has recently launched Anna Darpan, a new digital platform that will replace the Depot online system? So it is FCI, Food Corporation of India. They have recently launched this Anna Darpan, a new digital platform that will replace the Depot online system. Next, the Department of Telecommunication in collaboration with TSP has recently introduced an advanced system design to identify and block incoming international soup calls. So what does this TSP stands for? TSP is your telecom service provider. So P here stands for provider. Right, this system will identify and block the incoming international calls that are designed to show Indian mobile numbers, and this mechanism will be crucial for preventing various scams that are happening. Next, which institute has been awarded with the accreditation 689-90-N by the Capacity Building Commission under the National Standards for Civil Service Training Institutes? So, which is that institute? It is your Regional Labour Institute of Chennai, Tamil Nadu, and it has received the certificate of accreditation with the grading of Uttam. So, remember this also. Next, for which disease the Ministry of Health and Family Welfare announced significant enhancements to nutritional support under Niksha Poshan Yojana? So under TB, that is tuberculosis, it affects your lungs, right? And here under this 1000 rupees per month per patient will be provided for their treatment. Next, which state has recently become the first state in India to implement a new administrative structure called co-districts? So this co-districts has been implemented by Assam and became the first state in India to launch such a co-district initiative, right? Such 21 such co-districts were launched across Assam with an aim of bringing governance and administrative work closer to the citizens' home. This will basically streamline the delivery of various services such as certificate issuing, ration cards, land permits, government approvals, and many more. Next, in which state Prime Minister Narendra Modi has recently virtually laid the foundation stone for the development projects in the state worth 7,600 crore rupees? It is Maharashtra state, right? And here remember, PM Modi also laid the foundation stone for the upgradation of Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport, that is in Nagpur, Maharashtra, with an estimate cost of 7,000 crore rupees. He also laid the foundation stone of the new integrated terminal building at Shirdi Airport, costing over 645 crore rupees. Next, which country has recently been officially declared
free from trachoma, a contagious bacterial infection by the World Health Organization? It is our India, and our country became the third country in Southeast Asian region after Nepal and Myanmar to achieve this feat to be becoming free from trachoma. Next, in which state India's first modern Gaushala with biocomposed natural gas plant was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi? So, where is this new modern Gaushala located? It is located in Madhya Pradesh. Take a note of this, right? And this Gaushala is established over in 2 hectares of area. Next, who has recently inaugurated the major atmospheric Chernikov experiment observatory, that is Asia's largest and the world's highest imaging Chernikov observatory at Honle, Ladakh? So Dr. Ajit Kumar Mohati has inaugurated this major atmospheric Chernikov experiment observatory, that is Asia's largest and world's highest imaging Chernikov observatory in Honle, Ladakh. Next, Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A of the Indian Navy has recently embarked on a voyage to circumnavigate the globe as a part of the Navika Sagar Prakrama 2 expedition on what? It was on the INSV Tarini. INSV Tarini. INSV is your Indian naval ship vessel, right? Indian naval sailing vessel, not ship. Indian naval sailing vessel, right? INSV Tarini. Next is which state government has recently got approval from National Tiger Conservation Authority for the establishment of state's second tiger reserve? It is Bihar state. Take a note of this, and this approval is significant for the wildlife conservation efforts. Also, in managing and raising the tiger population specifically in the existing Valmiki Tiger Reserve that is located in the West Champaran district of Bihar. Next, where was the Phase 2 of the International Telecommunication Union World Telecommunication Standardization Assembly Hackathon conducted in October 2024? It was held where? It was held in New Delhi. Next, who has recently unveiled a commemorative postage stamp titled 25 Years of Progress Mudra Port to mark the completion of 25 years of Mudra Port? So right option is Bhupendra Patel. Here basically what aim is this commemorative postage stamp has been launched basically to complete to mark the completion of 25 years of this Mudra Port. Right. Next, where is this Mudra Port located? Mudra Port is located in Gandhinagar, Gujarat. Next, in which city Union Minister of State Dr. Jitendra Singh has inaugurated India's first demonstration facility for biopolymers? It is in Pune, Maharashtra. Take a note of this. This facility was developed by Pune, Maharashtra based Praj Industries Limited, an Indian multinational process and project engineering company. Next, which state has recently launched India's first state level cyber command and control center? It is Maharashtra. Next is homework, students. First is, tell me recently which state has signed an MOU with Infosys for skill census pre-validation. Then second, who has been appointed as the chairman of the National Turmeric Board? We just saw. Third question, then tell me recently AI Summit was attended by Prime Minister Narendra Modi recently. Where was this held? So these are your homework questions, students. That's all for the day. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एंटिटी लॉकर की, जो कि MEITY के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। क्या रीज़न है इसका लॉन्च करने का। देन हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, जो कि इंडिया के विजिट पे थे 14 से 18 जनवरी के बीच में। इन्होंने ओडिशा भी विजिट किया और वहाँ पे भी एक MOU साइन किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इंडिया का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में, इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए, इनोवेशन पे बढ़ावा देने के लिए। देन हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज, कन्फ्लिक्ट, डिजिटल इनइक्वालिटी, इससे जो बच्चों की लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि ये यूनिसेफ के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। देन हम इंडिया की GDP ग्रोथ की बात करेंगे, जिससे काफ़ी इफेक्ट हमें पड़ सकता है। वो क्या रीज़न है, अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं USA के, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, एंड उन्होंने क्या क्या नए यहाँ पे रेजोल्यूशन या फिर क्या क्या नई नई गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च करी हैं, जिससे हमारे
इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को एंड मैनी मोर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग टॉप नॉच हो सके। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। NEGD क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन। ये MEITY के अंडर आता है एंड इनके द्वारा ही ये एंटिटी लॉकर यहाँ पे लॉन्च किया गया है फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। जैसे मान लो आपका स्टार्टअप है, राइट, एंड आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं ऑनलाइन, ताकि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें एंड ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकें, राइट। तो इसी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे स्टोर करने का काम करेगा। ये क्लाउड बेस्ड फैसिलिटीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जो कि सिक्योर होती है, काफ़ी रिलायबल होती है एंड ईजी टू एक्सेस होती है। यहाँ पे 10 GB तक के आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी MSMEs, कोई भी लार्ज कॉरपोरेशंस, करेक्ट, इसको यूज़ कर पाएंगे। तो MEITY के द्वारा ये एंटिटी लॉकर यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, जो कि हैं थर्मन जी। ये इंडिया के विजिट पे थे अभी 14 से 18 जनवरी के बीच में, एंड इनके द्वारा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, पहले तो ये याद रखेंगे कि ये फर्स्ट बायलैटरल विजिट यहाँ पे थी इनकी इंडिया में। देन इन्होंने अभी रिसेंटली एक 60th एनिवर्सरी कमेमोरेटिव लोगो लॉन्च किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के साथ मिलकर राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। ये क्या है? 60 साल ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर की रिलेशंस को दर्शाता है। इसी के साथ ये अभी ओडिशा में थे, जहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट एंड सिंगापुर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक MOU साइन किया गया। जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने यहाँ पे पहला CSIR का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे लॉन्च किया थ्रू वर्चुअल मोड, जिससे क्या होगा, स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टअप्स को हेल्प किया जाएगा कि वो बिजनेस को ग्रो कर सकें, करेक्ट। उनको यहाँ पे नई इनोवेशन के ऊपर काम करने का बात की जाएगी। जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके यूज़ केसेस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे कि कैसे उनको हम यूज़ करके इंडिया के मार्केट्स के हिसाब से उनको ग्रो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी क्लाइमेट चेंज, कन्फ्लिक्ट एंड डिजिटल इनइक्वालिटी, इनकी बदौलत जो बच्चों की लाइफ है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वॉर टॉर्न एरियाज़ में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ के उस कन्फ्लिक्ट के शिकार हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डेट रिडन कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनसे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ये सारी रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा रिलीज़ की गई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क, USA में, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्लोबल इम्पैक्ट है कन्फ्लिक्ट ऑन क्लाइमेट, इसके 473 मिलियन बच्चे शिकार हैं, जो कि 1 in 6 ग्लोबली हैं। वहीं पे डेट रिडन कंट्रीज़ की बात करें तो नियरली 400 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि डेट रिडन कंट्रीज़ में रहते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं RBI के द्वारा रिलीज़ की गई NBFC अपर लेयर की लिस्ट फॉर FY25। देखो 4-5 यहाँ पे लिस्ट होती हैं। बेसिकली NBFC को कैटेगराइज किया गया 4 डिफरेंट लेयर में। एक होता है NBFC बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली NBFC की जो
टॉप लेयर है उसकी यहाँ पे गाइडलाइंस, उसकी यहाँ पे अपर लेयर की, नॉट टॉप लेयर, अपर लेयर की यहाँ पे लिस्ट रिलीज़ की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 कंपनीज हैं जो कि अपर लिस्ट में यहाँ पर आती हैं। एक और चीज़, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड जो कि क्वालिफाई कर गई थी फॉर इंक्लूजन ऑन द लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोरिंग, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है फॉर FY25 ड्यू टू ऑनगोइंग रिकॉग्नाइजेशन इन द बिजनेस ग्रुप, राइट। ऑल्सो आरबीआई ने रिटेन किया टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को इन द NBFC अपर लिस्ट डिस्पाइट उनकी रिक्वेस्ट टू डी रजिस्टर एट NBFC इज अंडर एग्जामिनेशन। फिर जो ये गाइडलाइन, ये 4 NBFCs की लेयर्स होती हैं, ये बेसिकली SBR फ्रेमवर्क 2021 में रिलीज़ की गई थी, उसके अंडर यहाँ पे इनको डिक्लेयर किया गया था NBFC को बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज एंड स्कोरिंग मेथडोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये बेसिकली एक फिक्स डिपॉजिट बेस्ड रुपए क्रेडिट कार्ड रहेगा जो कि UPI बेस्ड रहेगा। इसमें आप मान लो 5,000 मिनिमम 5,000 की FD करा सकते हैं एंड उसको पैसे को यूज़ कर सकते हैं, राइट। उस पैसे को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस UPI पेमेंट एंड उसको एज ए क्रेडिट कार्ड की तरह भी यहाँ पे आप उसको यूज़ कर पाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, फिर उस पर आप उसको रिचार्ज करा लें, राइट। तो IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने अनवेल किया फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल डाटा PLC। इनके द्वारा HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड SBI को रैंक किया गया अमंग द टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स की लिस्ट में। तो जो ग्लोबल डाटा PLC है इनके द्वारा रिलीज़ की गई टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स की लिस्ट, राइट। एंड इस लिस्ट में टॉप किसने किया, वो है JP मॉर्गन चेस, राइट, जो कि न्यूयॉर्क USA बेस्ड है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है बैंक ऑफ अमेरिका ऑफ नॉर्थ कैरोलिना USA, राइट। कमिंग बैक, अगर मैं बात करूँ इंडिया से, HDFC बैंक कौन सी पोजीशन पे था, HDFC बैंक आ जाता है आपका 7th पोजीशन पे, HDFC बैंक आ जाता है आपका 7th पोजीशन पे यहाँ पे, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस, वो सॉरी HDFC बैंक 7th पोजीशन पे था जो कि गिरकर अब कहाँ हो गया, 13th पोजीशन पे हो गया, राइट। IDFC बैंक की बात करें तो ये 20th पोजीशन 19th पोजीशन पे आ गया, एक स्कोर अप हो गया है। SBI बैंक की बात करें तो ये 24th पोजीशन पर यहाँ रहेंगे, राइट। ग्लोबल PLC की मैं बात करूँ तो CEO कौन रहेंगे, माइक डेंसन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, लंदन UK में। इसको फाउंड किया गया था 1999 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। इन्होंने रीब्रांड किया खुद को एज ट्रू होम फाइनेंस, राइट। अभी रिसेंटली श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में स्टेक बाय किया गया है वॉरबर्ग पिनकस के द्वारा एंड उसके बाद इनके नाम चेंजिंग की यहाँ पे बात की गई। इवन इन्होंने भी रिसीव की एक इन्वेस्टमेंट ऑफ 1225 करोड़ रुपीज़, राइट, जिससे जो कंपनी की नेटवर्थ है 3,300 करोड़ रुपए के पास पहुँच गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने रिटेन किया इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट एट 6.5% फॉर FY26 एंड FY27, राइट। तो 6.5% की ग्रोथ यहाँ पे लाने की बात की गई। देखो इंडिया में क्या हो रहा है अभी एंड ग्लोबली क्या हो रहा है, आप देखेंगे जो $1 है वो कितना हो गया है, 86.64 के करीब पहुँच गया है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप अब 47th प्रेसिडेंट बन गए। इनके द्वारा भी एक गाइडलाइंस लॉन्च की गई है कि जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, राइट, उनके जो बच्चे होंगे, राइट, उनके जो बेटा बेटी होंगे, उनको यहाँ पे वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको US की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, राइट, जो डंकी मार के जैसे USA में आ जाते हैं, राइट, जैसे मैक्सिको के रूट के थ्रू, उन पर यहाँ पे उनको वापस भेजने की बात की जाएगी, उनको डिपोर्ट करने की यहाँ पे बात की गई, जिससे क्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हमें देखने को मिलेगा इंडियंस का जो कि बाहर USA में इलीगली गए थे। इसी के अलावा कनाडा एंड मैक्सिको पर यहाँ पे टैरिफ्स लगाने की बात की गई, 25% टैरिफ लगाने की बात की गई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb 2025 ऑनवर्ड्स, राइट। तो इनसे काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें इंडिया की ग्रोथ पे भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि वो बच्चे वापस डिपोर्ट किए जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे IMF के द्वारा भी कुछ रिस्क वार्न किए गए, जैसे पॉलिसीज आएंगी, हाई टैरिफ्स देखने को मिलेंगे, डिस्टर्ब ग्लोबल ट्रेड हमें देखने को मिलेगा, लोअर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही हैं इन द मिडल ईस्ट एंड यूक्रेन, जिससे जो कॉमोडिटी प्राइस हैं, जो एनर्जी के प्राइस हैं, जो फूड सेक्टर जो फूड प्राइस है, उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी IMF की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा रहेंगी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA रहेगा। 1944 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं मूडी। ये एक रेटिंग एजेंसी है, इनके द्वारा इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7% प्रोजेक्ट की गई फॉर FY25,
राइट। स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, पहले 8.2 8.4% प्रोजेक्ट की गई थी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये स्लो डाउन दिख रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इवन आप इंडिया की स्टॉक मार्केट देखेंगे तो निफ्टी भी आज यहाँ पे काफ़ी गिरता हुआ दिखा, काफ़ी स्टॉक्स में भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है आज, राइट। एंड अगर हम इकोनॉमिक आउटलुक की सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू शो पॉजिटिव ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रू बाय 3.5% एंड सर्विसेज एक्सपेंडेड बाय 7.1%। देखो एक चीज़ और इंडिया के सिनेरियो में आप क्या समझिए कि फेड जो है ना बाहर यूएसए में, तो वो तो इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, लेकिन इंडिया ने अभी तक आरबीआई के द्वारा एक बार भी अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करती है तो इससे क्या होगा, लोन ज़्यादा लेंगे लोग, ज़्यादा लोन लेंगे तो ग्रोथ हमारी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। वो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सीएसई एंड एनसीडीईएक्स। सीएसई क्या है, कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज, ये श्रीलंका का है। एंड एनसीडीईएक्स क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये इंडिया का है। तो इन दोनों के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ ताकि जो कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग है वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ सके, जिससे क्या हो, दोनों के में एक बेसिकली क्या हो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो एंड दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रेडिंग के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये सक्सीड इनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे वितुल कुमार को, राइट। इसके बाद बात करें हम वो है महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल, इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। एंड शमशेर सिंह, राइट, जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो के, इनको अपॉइंट किया गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं निधि खारे। इन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये सक्सीड करेंगे किनको, प्रशांत कुमार सिंह को। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इंडिया ओपन की। तो विक्टर एक्सेल्सन एंड एनसी यंग, इन्होंने सिक्योर किया है मेंस एंड वीमेन सिंगल टाइटल्स रिस्पेक्टिवली। विक्टर एक्सेल्सन की बात करें तो ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। वीमेन सिंगल टाइटल की बात करें तो एनसी यंग साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। एंड मेन सिंगल टाइटल एंड वीमेन सिंगल टाइटल्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आ जाते हैं खो खो वर्ल्ड कप। खो खो वर्ल्ड कप का भी पहला एडिशन देखने को मिला था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हमें देखने को मिला था, न्यू दिल्ली में देखने को मिला था। कब से कब तक हुआ था ये इवेंट आपका, खो खो वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला था 13 से 16 जनवरी के बीच में, राइट। एंड यहाँ पे कौन विजेता रहा, तो इंडिया 13 से 19 जनवरी के बीच में। एंड यहाँ पे इन बोथ इंडियंस मैन एंड वीमेंस खो खो टीम यहाँ पे विनर्स रही खो खो वर्ल्ड कप की, जिसका पहला एडिशन था यहाँ पर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, यहाँ पे देखेंगे इंडियन मेंस टीम वॉज इन ए ग्रुप और वीमेंस टीम भी ए ग्रुप में थी। एंड ये रिस्पेक्टिव यहाँ पे कंट्रीज थी ए ग्रुप में। फिर जो खो खो वर्ल्ड कप है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनिक सिन्हा। जेनिक सिन्हा इटली से बिलोंग करते हैं। एंड ईगा स्वातिक, ये पोलैंड से बिलोंग करती है, राइट। इनको क्राउन किया गया है आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन। ये पहले इटालियन प्लेयर बने जेनिक सिन्हा जिनको सम्मानित किया गया यहाँ पे। एंड ईगा स्वातिक का ये सेकंड टाइटल रहेगा। पहली बार इनको 2022 में सम्मानित किया गया था आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस है, राइट। तो यहाँ पे मैन सिंगल, वीमेन सिंगल, मैंस डबल, वीमेंस डबल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो जाएगी। देन हम मूव ऑन करेंगे होमवर्क सेक्शन पर। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने भी ऑर्गेनाइज कराया थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया, जो कि 19 से 22 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, राइट। एंड जो ये इवेंट है ये इंटीग्रेट करेगा नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को एंड सस्टेनेबिलिटी को फोकस में रखेगा इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, राइट। ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया थी इसकी एक थीम याद रखेंगे, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने अभी इंप्लीमेंट किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, जो कंप्लीट करेगा डेकेड इन सितंबर 2024। तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक को होस्ट किया क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाएगा। 2 डे लॉन्ग ये कॉन्क्लेव रहेगी, जिसका फोकस रहेगा ऑन द इंपॉर्टेंट इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी डेवलप किया स्विफ्ट प्लेटफॉर्म को, जो कि है सिंगल विंडो आईटी प्लेटफॉर्म।
तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये? देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया था। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका एम रहेगा टू सिंप्लीफाई द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड जो ट्रांसपेरेंसी है वो एनहेंस करने की यहाँ पे बात की गई, एंड जिससे क्या होगा, IFSC में जो ऑपरेशंस है वो और बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर जिसका नाम रहेगा एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद IAI। तो वो कौन है? वो है REC लिमिटेड, सॉरी वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। ये जॉइंट वेंचर रहेगा एंड जहाँ पे BEL के पास 40% स्टेक रहेगा इस जॉइंट वेंचर में, एंड IAI के पास यहाँ पे 60% का स्टेक रहेगा। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम पावर को? ये एक फैसिलिटी है जो नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी में रहेगी इन न्यू दिल्ली। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट करा गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, हमारे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया टू रीनेम किस एयरपोर्ट को एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट? तो वो है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे रीनेम किया जाएगा टू जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट, नेम द मिशन जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इन मुंबई महाराष्ट्र। वो है क्रूज भारत मिशन। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो क्रूज में जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया का टारगेट है कि हम 50 लाख टूरिस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकें इन टूरिज्म इन दिस क्रूज इंडस्ट्री बाय 2047। नेक्स्ट, किस सिटी में अभी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी कैप्ट किया जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट है उसको सेम रखा फॉर द थर्ड क्वार्टर? तो ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने अभी एक वार्म सेंड ऑफ दिया टू 7000 किलोमीटर वायुवीर विजेता कार रैली को जो कि न्यू दिल्ली से हुई? करेक्ट, सी ऑन द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये वार्म सेंड ऑफ किया गया। 7000 किलोमीटर की ये रैली रहेगी, राइट। न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च ये स्टार्ट हुई है एंड ऑन द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट बन गई टू गेट नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर? तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर जो कि नीति आयोग का वो मिला है वो है तेलंगाना को। इससे क्या होगा, जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। वीमेंस को यहाँ पे फाइनेंसिंग के ऊपर बात की जाएगी, स्किलिंग के ऊपर बात की जाएगी, इनकी मार्केटिंग की जाएगी, इनकी मेंटरशिप इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि ये अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो कर सके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने अटेंड किया 40th रेजिंग डे परेड ऑफ डैश इन नासिक महाराष्ट्र। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ये 40th रेजिंग डे थी, राइट, रेजिंग डे परेड थी जिनको अभी अश्विनी वैष्णव जी ने ऑब्जर्व किया। इसी के दौरान ये चीफ गेस्ट थे एंड यहाँ पे 33 पर्सनल्स को, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल्स को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया एंड जीवन रक्षक मेडल से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को अभी GI टैग मिला बाय GI रजिस्ट्री? तो असम के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे GI टैग मिला है। 8 प्रोडक्ट्स रहेंगे जिसमें से अगर हम बात करें जैसे जो गिशी, देन जो ग्वारन, देन ओंडला, गुआखा, नार्जी, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे GI टैग मिला। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया अन्ना दर्पण जो कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिप्लेस करेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को? तो वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ये नया प्लेटफॉर्म अन्ना दर्पण जो कि रिप्लेस करेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को। ये FCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद TSP इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एन एडवांस सिस्टम डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक इनकमिंग इंटरनेशनल स्वूप कॉल्स। TSP की यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। TSP है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, P क्या हो गया फिर प्रोवाइडर। बेसिकली इसका एम क्या रहेगा इस नई सर्विस का या फिर इस इनिशिएटिव का, ताकि जो इंटरनेशनल कॉल आती हैं, राइट, एंड उस पर इंडिया का नंबर शो होता है, वो बेसिकली स्कैम कॉल्स होती हैं, उनको खत्म करने के लिए एंड यूजर्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूट ने को अवार्ड किया गया विद एक्रेडिशन 6890N बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अंडर नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो किस इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिया गया ये? तो वो है रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा। एंड इनको जो ये एक्रेडिशन मिला है ना उसकी ग्रेडिंग रहेगी उत्तम। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मार्क करके चलिएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं किस डिजीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी अनाउंस किया एनहेंसमेंट टू न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर निक्षय पोषण योजना। तो ये है ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंड यहीं पे ये टीबी है, बेसिकली ये लंग को इफेक्ट करती है एंड यहीं पे सरकार 1000 रुपये हर महीना हर पेशेंट को जो कि टीबी से ग्रस्त है उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट किस स्टेट ने अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोर डिस्ट्रिक्ट्स। ये कोर डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे आई हैं? असम में आई हैं। इससे क्या होगा, जो गवर्नेंस है और बेटर होगी, लोगों को बेटर सर्विसेज मिल सकेंगी, टाइमली सर्विस मिल सकेंगी एंड सर्विसेज जैसे इशूइंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड्स, लैंड परमिट्स, गवर्नमेंट अप्रूवल से ईजिली यहाँ पे मिल सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट्स वर्थ 7,600 करोड़ रुपीज़। तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में ले किए गए हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे अपग्रेडेशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा। 7,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। देन इन्होंने ऑपरेशन यहाँ पे अनाउंस किया ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट किस कंट्री ने अभी रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। ये कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, WHO के द्वारा इनको डिक्लेयर किया गया। ये है हमारी कंट्री इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया 3rd कंट्री बनी टू बी फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा एज पर WHO। इससे पहले नेपाल एंड म्यांमार को भी यहाँ पे डिक्लेयर करा गया था। नेक्स्ट किस स्टेट में इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला को लॉन्च किया गया विद कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, CNG प्लांट रहेगा ये, राइट, जिसको PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला कहाँ पे रहेगी? ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट किन्होंने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया मेजर एटमॉस्फेरिक चर्निकॉव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी को, जो कि एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चर्निकॉव ऑब्जर्वेटरी है होलने लद्दाख में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। किनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहाटी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट आ जाते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ऑफ द इंडियन नेवी। इन्होंने अभी रिसेंटली एम्बार्क किया ऑन अ वॉयज टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब एज अ पार्ट ऑफ नविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन। किस शिप वेसल पे ये गए? तो ये है INSV तारिणी। ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, राइट, INSV तारिणी। नेक्स्ट किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल मिला फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट 2nd टाइगर रिजर्व। तो बिहार को ये अप्रूवल मिला है कि ये बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व बन जाएगा एंड इस प्लान से क्या होगा, बेसिकली टाइगर्स को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जाएगी। करंटली अगर हम देखें आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ पे करंटली 54 टाइगर्स हैं। नेक्स्ट वेयर वॉज द फेज 2 ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज असेंबली हैकेथॉन को कंडक्ट कराया गया अक्टूबर 2024 में। तो न्यू दिल्ली में हुई थी ये हैकेथॉन आपकी, ठीक है। एंड 6G 5G सैंडबॉक्स के ऊपर AI को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एंड इवन यहाँ पे हर टीम ने रिसीव किया ऑलमोस्ट $1,000 का, ताकि वो अपनी AI सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज कर सकें यूजिंग क्लाउड। तो क्लाउड सर्विसेज में यहाँ पे $1,000 उनको प्रोवाइड किया गया कि क्लाउड को यूज़ करके वो यहाँ पे हैकेथॉन के थ्रू हैकेथॉन में जो प्रॉब्लम दी जाएंगी उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड अ कमेमोरेटिव स्टैम्प टाइटल 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मुद्रा पोर्ट, ताकि 25 साल मुद्रा पोर्ट के पूरे हो गए, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है। देखो मुद्रा पोर्ट है कहाँ पर? ये है गांधीनगर गुजरात में, राइट। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? इनके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स। तो पुणे महाराष्ट्र में यहाँ पे इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स, राइट। एंड इसको किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। नेक्स्ट इज होमवर्क स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज टेल मी recently which state has signed an MOU with Infosys for skill census pre-validation. Then second, who has been appointed as the chairman of the National Turmeric Board? We just saw. Third question, then tell me recently AI summit was attended by Prime Minister Narendra Modi recently. Where was this held? So these are your homework questions, students. That's all for the day.